Now, as the battle for Delhi hots up, the Delhi BJP president Virendra Sachdeva has released a 4-minute 20-second video of the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's official residence, which he recently vacated after quitting as the Chief Minister. Posting this video on social media platform X, Virendra Sachdeva has said, and I quote, "Kejriwal built a 7-star resort for himself by embezzling public money. He highlighted the amount spent on the marble granite lighting, the gym and the spa fittings and other facilities." Using this video to target the Aam Aadmi Party, the BJP says that the Aam Aadmi Party looted people to build resorts for themselves. The Aam Aadmi Party is yet to respond to the BJP's allegations. We're right now being joined by the president of Delhi BJP, Virendra Sachdeva. सर, जिस प्रकार से आज आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अरविंद केजरीवाल का जो घर है, उसकी जब वो चीफ मिनिस्टर थे घर था, उसकी पिक्चर्स जो रिलीज करी हैं, वीडियोस जो रिलीज करी हैं, और काफी समय से बीजेपी ये मुद्दा उठा रही थी कि एक अरविंद केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपना घर बनाया, जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से महल खड़ा किया, उस पर बीजेपी काफी समय से सवाल उठाती रही और आज एक वीडियो भी सामने आया। देखिए, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि शीश महल भ्रष्टाचार का वो महल है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के लोगों की टैक्स की पैसे को लूट के कमाया है। ये जो आज वीडियो देखा, ये हैरान करने वाला है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लगभग पैसा आप सोना, जकूजी, जिम पे खर्च कर रहे हैं। ये जो अय्याशी का, ये आम आदमी है, ये अय्याशी का सामान है। 7 स्टार रिसोर्ट्स में भी इस तरह के सोना, जकूजी नहीं होते जिस तरह से इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये कहते हैं मैं आम आदमी हूं। दिल्ली की जनता ने आपको इसके लिए चुन के भेजा था। भ्रष्टाचार, चोरी और दलाली की कमाई से ये शीश महल बना है। और आज समझ में आ रहा है कि क्यों अरविंद केजरीवाल किसी को अपने घर में नहीं घुसने देते थे, क्यों आतिशी बार बार चाबी के लिए तड़प रही थी कि शीश महल किसी को देखने ना दे। अगर इस तरह से आप दिल्ली की जनता को धोखा देके अय्याशी जुटा रहे थे, तो आप दिल्ली की सेवा क्या करेंगे? दिल्ली की सड़कें जाके देखिए, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। गंदा पानी लोग पी रहे, लेकिन आपको अय्याशी के लिए इतना बड़ा सोना, जाकूजी बात चाहिए। तो दिल्ली को शर्मसार करने वाला ये वीडियो है जो ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली की जनता को धोखा दिया। सर, अगर शराब घोटाले की बात की जाए, चाहे आप शीश महल जो अरविंद केजरीवाल के जो सीएम रेजिडेंस था उसको कहते हैं, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इसको उठाती आई। चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी सरकार में जब आई थी, कहा था आम आदमी पार्टी की तरह, आम आदमी की तरह रहेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से भी इल्जाम लगाए गए और लोगों ने भी देखा, इस वीडियो से भी दिख रहा है कि काफी कुछ बदल गया। देखिए, करप्शन इस विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जिस करप्शन को खत्म करने आए थे, उस करप्शन के मसीहा बन के बैठे। पिछले 10 सालों में इन्होंने दिल्ली को जितना लूटा, आज तक कुछ ऐसा दिल्ली में हुआ नहीं है। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या इनके बाकी मंत्री हो, इन्होंने सिर्फ चोरी, लूट और खसूट का काम किया। मतलब गैंगस्टर ये पाल रहे हैं, दुनिया को धमका के पैसे ये ले रहे हैं, अपने महल को छुपा के रखते हैं। दुनिया का, मतलब दिल्ली के लोगों का पैसा लगा के आप जिम देखिए ना, मतलब 50 आदमी भी उस जिम में जाए तो बड़ा पड़ेगा। और जो बाथरूम की जो स्थिति है, मैं हैरान हूं कि कैसे अरविंद केजरीवाल तुम्हारे, मतलब अगर गैरत नाम की कोई चीज होती तो डूब के मर जाना चाहिए इनको। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। सो दैट वाज वीरेंद्र सचदेवा स्पीकिंग टू अस विद मीडिया जर्नलिस्ट सचिन रावत, Mohit Bharwat, Times Now. So the visual that you're seeing on the screen is a video that has been posted by the BJP, and it shows how plush the house is. Akashdeep Muni is joining us on the phone line, political analyst. Thank you for joining us. Akashdeep Muni, this is going to be very, very significant ahead of the assembly elections in Delhi. The BJP has posted this video and they have accused the Aam Aadmi Party of building 7-star resorts for themselves, embezzling public money. See, as the elections are coming, there will be number of allegations from the Bharatiya Janata Party on Aam Aadmi Party. But the moot question is that, what about the law and order which is with Amit Shah? The Honorable Home Minister has the law and order in his hands, but there is robbery happening, there is killings happening every day and night. Yesterday, there was a threat to bomb 40 schools in the national capital. What the Home Minister has done? Is the Home Minister in Delhi? These all questions that the common man... Okay, so you're saying that the Aam Aadmi Party is going to focus on law and order. But what about this video? Are you looking at the visuals on the screens? Because, you know, the BJP has also pointed out that this is a person who said that I'm going to live a very Aam Aadmi life. But what we're looking at is not Aam Aadmi at all. It's a luxurious plush house that has been made.
See, this is the Chief Minister's residence. Whosoever will be the Chief Minister, if tomorrow Bharatiya Janata Party comes into power, it will be the Chief Minister's residence. This is not a personal property of any person or Arvind Kejriwal or Atishi. The moot question is that if you are questioning this particular house, then people will be questioning the PM residence as well, which has been built in 2,000 crores. So there will be a number of questions regarding this. But what about the common man's problems? Is you have BJP has power in 20 states in this country. Which state has 24 hours electricity? Which state has 24 hours water supply? Which state has free bus ride for women? These all questions that what amenities that common man is getting, these are the moot questions that this election is all about. This election is not about Sheesh Mahal. This election is about people of Delhi and also the crime that is happening now and which has to be stopped by the so you're saying that this is not an issue that people will think about. Akashdeep Munee, thank you for joining us. We have Mohit also joining us on the broadcast. Mohit, the Aam Aadmi Party says these are not issues of the people. What about law and order? But the video in question released by the BJP shows the residence of the Chief Minister, and the claim that Arvind Kejriwal had made is also going to come back to haunt him. Take us through the details of what this video really shows of the plush and the opulence that we're seeing in that CM residence. Well, in fact, now it's not about CM's residence, it's about Arvind Kejriwal's politics. Now, Aam Aadmi Party came on a premise of saying that we will live like an Aam Aadmi, we will not take big house, will not take big car, and we will do the politics for the common man, and we will live like a common man, we'll conduct ourselves like a common man in public life. But BJP says that is not the case. Now, BJP today released a video of Arvind Kejriwal's residence when he was the Chief Minister, and the BJP called that this is the Sheesh Mahal of Arvind Kejriwal. So the BJP also goes on to say that while people of Delhi were suffering during COVID, while the people did not have basic amenities like clean drinking water or proper electricity, Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party were busy building and constructing this particular lavish house for Arvind Kejriwal. Now, it's not about that this is Chief Minister's house or the next party who will come to power in Delhi will go and their leader will live in that particular house. It's about the politics of Arvind Kejriwal. You see, when Aam Aadmi Party was formed, they were formed on the premise of, yes, we are party of common people. We are against corruption. We do not want that we should have so much ACs in our houses. Remember, Arvind Kejriwal once raised questions on the air conditions in Sheila Dikshit's house. So when you were raising questions at that particular time and now you have this lavish house being constructed, that is where the BJP says that this is an issue that Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal has deviated from the moot place that they came to power on. And now the BJP also says that this will be their major plan in run-up to the elections, and BJP will be raising this particular issue when they go to the people in run-up to the election, because remember, this time around Delhi elections are very, very interesting. Aam Aadmi Party have announced their second list of candidates. Many of the sitting candidates have not been given ticket. Manish Sisodia's seat has been changed. We see that Rakhi Bildan's seat has been changed. So this time around, it seems that after all these allegations, and specifically of Sheesh Mahal by the BJP, we see that Aam Aadmi Party is on the back foot. This will be not be an easy battle for the Aam Aadmi Party this time around, and BJP releasing the video, and the timing is also very important because in run-up to the elections, BJP has released this particular video where they say that how there is a lavish construction that is being done, ACs, and in washrooms also, the toiletries and the furniture, everything is worth crores of rupees, and this is how Arvind Kejriwal, BJP says, has looted people of Delhi, because BJP says that this money belongs to people of Delhi, but then this money was being spent on construction and renovation of Arvind Kejriwal's house, which is something which is very, very shocking. One of the biggest issues going into the assembly elections. That's the question. Mohit, request you to stay with us. We have Manjinder Singh Sirsa also joining us on the broadcast. Thank you for joining us. Mr. Sirsa, is this video that has been posted by the BJP, it shows the opulence in the CM's residence. Take us to the charge of the BJP against the Aam Aadmi Party. See, this is not a BJP charge. ये गलत होगा कहना. ये दिल्ली के लोगों का चार्ज है. ये दिल्ली के लोगों का विषय है कि जब वो बिना ऑक्सीजन के कोविड में तड़प कर मर रहे थे, हॉस्पिटल नहीं थे, उनके पास दवाई नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, तो एक बहरूपिया जो गरीबों वाले कपड़े पहन के कहता मैं गरीब हूँ, खुले से कपड़े पहनकर कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, मैं चप्पल पहनकर घूमता हूँ. एंड व्हेन यू सी हिज रियलिटी, he is enjoying the best of life which nobody could have dreamed in his dreams. Even a billionaire would shy away seeing this.
इस तरह से एक सोना का रूम दिखाई दे रहा है इसमें, एक जकूजी जो 50 लाख की आती है, एक क्रॉस ट्रेनर जो 25 लाख का आता है, एक कसरत की मशीन मल्टी वेट लिफ्टिंग जो 50 लाख रुपए की आती है, एक स्पा जिसके अंदर सोना स्टीम बना हुए हैं, अब जिसमें आपने मसाज बेड देख रहे हैं। आप देखिए कि एक आदमी की लग्जरियस लाइफ जीने की कितनी बहुत उसकी जो है कि वो देश दिल्ली का लूट कर धन 100 करोड़ रुपए में घर बनाते हैं और फिर आके बाहर कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो घर ही नहीं है, मेरे पास तो कमरा ही नहीं है। सो दिस इज द ट्रू फेस. It is not about BJP. We are not charging him. The people of Delhi are asking my question कि आप तो कहते थे मैं 2 कमरे में मकान में रहने वाला हूं. What is this? This shows your true color कि आपका Okay, shows the true color of the Aam Aadmi Party, says the Aam Aadmi Party has now been exposed. Listen in to Shehzad Poonawalla of the BJP. टोटो का टॉयलेट, वियतनाम की मार्बल, करोड़ों रुपए की कर्टन्स और फिटिंग्स, शीश महल में 150 करोड़ रुपया दिल्ली वासियों का फूंकने के बाद अब देखिए सुल्तान केजरीवाल जो शीश महल में ही रहते थे, उनका जकूजी और जिम और सोना इक्विपमेंट। ये जकूजी, जिम, सोना इक्विपमेंट में लगभग 2 करोड़ की मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग लगी, लगभग 1.5 करोड़ का इंस्टॉलेशन का खर्च आया और लगभग 35-40 लाख का जिम और सोना और स्पा का इक्विपमेंट लगा। बिल्कुल, मतलब कुल खर्च 3 करोड़ 75 लाख रुपए। यही 3 करोड़ 75 लाख रुपए जो एक आदमी के आलीशान खर्च के लिए इस्तेमाल किए गए, उसमें लगभग 34 EWS फ्लैट बनते, लगभग 15 लो इनकम ग्रुप के फ्लैट बनते, लगभग 150 CNG की ऑटो रिक्शा आ जाती, लगभग 326 ई रिक्शा आ जाती। सोचिए, एक आदमी की मस्ती और एक आदमी के खर्च और आलीशान खर्च के लिए कितने गरीबों का हक और अधिकार मारा गया। ये वो लोग हैं जो बच्चों की सौगंध खाते थे कि छोटे घर में रहेंगे, शीश महल में नहीं जाएंगे, VIP सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं बनाएंगे, स्वराज की बात करते थे शराब पे आ गए, अन्ना की बात करते थे लालू पे आ गए। यही सियासी धर्मांतरण है। ये रेनोवेशन का खर्च नहीं, ये सियासी रेनोवेशन का प्रमाण है कि जो लोग कहते थे कि हम साधारण तरीके से रहेंगे, उन्होंने 4.25 करोड़ रुपए केवल अपने नहाने और स्पा और जिम के लिए खर्च कर दिए। ये अश्लील खर्च है। 150 करोड़ रुपए शीश महल में खर्च किए गए, उड़ाए गए जब कोविड का कालखंड था और दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी। So that's the charge of the BJP. You're seeing the video on the screen. This is from the former Chief Minister. This is from the CM residence when Arvind Kejriwal was the Chief Minister of Delhi. RP Singh is also joining us on the broadcast. Thank you for joining us, Mr. Singh. Crores seem to have been spent on the renovation of this house and changing the entire CM residence. Well, that's what the irony is, that they came with a promise of being a common man, a poor man, Aam Aadmi. And then they looted Delhi and built which probably 12 toilet seats were there, and each toilet seat costed some 12 lakh rupees, gold plated and all. But imagine this: a woman in Delhi can't afford a Mangal Sutra because of their atrocities, and then they are using gold for toilet seats. So this is the irony of the Aam Aadmi Party, and then they said this is for the CM residence. But who gave them permission to build up the CM residence? Was there any cabinet note approved? Was there any cabinet meeting which said that okay, we're going to spend some 60 odd crore rupees for CM residence, or 56 crore rupees to be precise, for CM residence? Where was the approval? I mean, they used to say that we will conduct Mohalla clinic, Mohalla Sabhas for everything which we do. Did they conduct any one Mohalla Sabha and seek permission of Delhi that we are going to build up a CM residence for 56 crore rupees? Now they don't do Mohalla Sabhas. Okay. Let them do Mohalla Sabha and then go and claim that they have spent 56 crore rupees in Corona time for building up a CM residence. Okay, then people all right. get the right answer. Okay, Mr. RP Singh, thank you for joining us. The BJP's charge being, look at the misplaced priorities of the Aam Aadmi Party. Here is a person who said that I'm like you, I'm an Aam Aadmi, and crores have been spent at the CM residence. This is going to be one of the biggest talking points going into the Delhi Assembly elections. The war of words continues and we're keeping a track of that. Quick break now. We'll be right back.